So, good morning to everyone. Uh, Today we will discuss about cell, especially prokaryotic and eukaryotic cell. What is prokaryotic and eukaryotic cell? So, first prokaryotic और eukaryotic cell start करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल होता क्या है एक्चुअली. ओके, जैसे कि सभी को पता होगा सेल होता क्या है. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है वो है सेल. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस. ये एक सेल क्या कर सकता है? सारे लाइफ प्रोसेसेस कर सकता है, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन. Based on the presence or absence of a true nucleus and membrane-bound organelles, the cells are divided into prokaryotic and eukaryotic cells. अब जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है. द प्रोकैरियोट नाम में ही पता चल रहा है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है. प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. सो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द स्मॉल, सिंपल एंड मोस्ट प्रिमिटिव. ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? सबसे प्रिमिटिव सेल्स है. First to come into existence perhaps 3.5 billion years ago, the prokaryotic cells are the most primitive cells from the morphological point of view. Morphological point of view मतलब क्या होता है? ये दिखने में बहुत छोटे होते हैं. Examples of prokaryotic cells. अब examples of prokaryotic cells में क्या क्या include है? Mycoplasma, PPLO. Mycoplasma, as we know, the smallest living cell. Mycoplasma, E. coli, cyanobacteria, etc. So let's study the prokaryotic cell structure. A bacterial cell structure. A bacterial cell structure includes capsule. What is capsule? In some bacteria, the cell wall is surrounded by an additional slime or gel layer called capsule, made up of polysaccharide that protects the bacteria from desiccation or dehydration and also helps to survive in harsh environment. Cell wall. The plasma membrane is covered with a strong and rigid cell wall that renders mechanical protection and provides the bacteria a proper shape made up of peptidoglycan. It's peptidoglycan. Plasma membrane. The bacterial cell is surrounded by a living ultra-thin membrane called plasma membrane made up of phospholipid bilayer and proteins. Cytoplasm, gel-like matrix with water, enzymes, and cell structures. It is the ground substance and the set of all metabolic activities. Nucleoids. It is the region where prokaryotic DNA is located. In prokaryotes, the nuclear envelope is not present. That's why the genetic material is not present. That's why the genetic material, DNA, RNA are found in... It is the region where prokaryotic DNA is located. In prokaryotes, the nuclear envelope is not present. That's why the genetic material, DNA and RNA are found in the protoplasm. Plasmid. Extra chromosomal double-stranded circular DNA encodes genes for fertility. Ribosome, storage reservoirs. Flagella, structure for locomotion, made up of flagellin protein. Fimbriae and pili. There is a non-motile but adhesive structures, and pili helps in conjugation.